Hello everyone, welcome to BISWA'S Chemistry. Myself Kausik Biswal and welcome to Mahabharatan series. In this lecture, I am going to discuss about the most expected 2 marks, 3 marks questions of the chapter electrochemistry. Okay, हम 2026 council exam को target करिबा और माने समझते successful हवा. Okay, और जतो मन वीडियो भल लागुची वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक कौशिक बिस्वाल पर विश्वास रखो. काहेकि ना तुम मानकर विश्वास भरोसा ही मो पई सब किछि and without your support I am nothing guys. Okay, चलो वर्तमान देखिए हमर फर्स्ट क्वेश्चन आज कोन अछि. ओके तले फर्स्ट क्वेश्चन एबर थोड़ा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 99% चांसेस ए क्वेश्चन पडिबार. ओके क्वेश्चन अछि डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तापर डिस्कशन करेबा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तापर डिस्कशन करेबा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तापर डिस्कशन करेबा हमर मोलार कंडक्टेंस. क्लियर ना क्लियर नो. तले चलो फर्स्ट आज डिस्कशन करेबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. कोन डिस्कशन करेबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हला. तमन जानि छ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तार सिंबल हला पिला माने रू, तार सिंबल कोन तमरो रू. ओके तो एलाबोरेट करेबी तापर म तार डेफिनेशन को लिखिबे हला. तमन समझ जानि छ we know the resistance नहीं कि we know the resistance of a conductor okay we know the resistance of a conductor is directly proportional okay is directly proportional to the length of the conductor okay to the length of the conductor and is inversely proportional to the area of the cross section and is inversely proportional to the area of the cross section हला. त लिख दे परिबा तले हम रेजिस्टेंस रो सिंबल जान छ r जे कि तमरो गोटे कंडक्टर रो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए से कंडक्टर रो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. क्लियर ना क्लियर नो. देखलो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a. तले हम लिख दे परिबा r इज प्रोपोर्शनल टू l by a ना नहीं. आ प्रोपोर्शनल साइन गुटिया पे हम गोटे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करबा r इज इक्वल टू तमरा गला रो इनटू कते हे गला l by a. तले जो रोटा होजी एला हला गोटे कांस्टेंट, ए रोट हला गोटे कोन तमरो ए कांस्टेंट called specific resistance हला called what specific resistance. तले रोट होजी गोटे कांस्टेंट ताक हम कोन कहबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्लियर ना क्लियर नो. हाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तले बर्तन देखो जते बेले मु गोटे काम करूची जति गोटे काम करिवि when L is equal to 1 centimeter, A is equal to 1 centimeter square. जब L जगह में पुट कर दे 1 centimeter, एरिया जगह पुट कर दे 1 centimeter square. देख लो तुमरा R टा रो सहित इक्वल हो जाउछ ना. तले R टा तुमरा का सहित इक्वल हो गला रो सहित इक्वल हो गला. क्लियर ना क्लियर नो. वर्तमान जो रो बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो डेफिनेशन लिख दे परिबी. तले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर at constant temperature is called specific resistance. क्लियर ना क्लियर नो. देखलो जदि पिला माने गोटे कंडक्टर लेंथ हला 1 cm तार एरिया जदि हेगला 1 cm स्क्वायर ताल तार वॉल्यूम केते हबो 1 cm क्यूब जोटा कि मु कहि परिबी गोटे यूनिट वॉल्यूम बोली. क्लियर ना क्लियर नो. ता माने गोटे कंडक्टर रो गोटे यूनिट वॉल्यूम तमरा जेति की रेजिस्टेंस शो करूची सेटा को हम कोन कहबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्लियर ना क्लियर नो. वर्तमान हम तार डेफिनेशन को लिख दे परबा. देखाउस तो ते देखि दलो. यस वर्तमान तार डेफिनेशन को लिख देबा तळे लिख देबा त लिख दे परिबा. So specific resistance is the resistance specific resistance the resistance offered by unit volume of a conductor at constant temperature हला at constant temperature हला. बस एति कि तमन के एग्जाम रे लिखिबार अछि. दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. आउट इन मन किता ए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रे यूनिट हला एटा मन रखिबो. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रे यूनिट हला ओम आ तमर कोन सेंटीमीटर हला. ओम हला ओम रो सिंबल जान ना ओम सेंटीमीटर हला. ता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो सिंबल तमर यूनिट हला कोन तमर ओम आ कोन तमर सेंटीमीटर. ओके सो गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट.
चलो तापर हमर नेक्स्ट अछि क्वेश्चन डबल आई बिटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहले माने कोन बुझिबा तार सिंबल तमन जानिछ कोन कापा कापा क्लियर ना क्लियर नो अच्छा तमन जानिछ छुआ रेजिस्टेंस रो उल्टाटा हला तमर कंडक्टेंस मींस रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल हला तमर कंडक्टेंस सेमती जत मन पचरा जीवो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहले कोन बुझिबा तमे को सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होजी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल क्लियर ना क्लियर नो तमे एइना टिके पूर्व पढी गइलो R is equal to पढ़ी कौन आइलो रो इनटू कौन पढ़ी आइलो L by N जब तुम खाली रो रो वैल्यू को बाहर करिवो मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो वैल्यू को बाहर करिवो ताले ये तमरे जो R इनटू केते जो तमरो A by L ताले रो जो तमर केते R इनटू केते जो तमरो A by L हबो ना हबो ने बस मोटा खाली लिखि देली साइड रे क्लैरिटी पे कहबी काई लिखिली ताले तमन कहली रेजिस्टेंस रो उल्टाटा हला कंडक्टेंस सेमदी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहले तुम माने बुझिबो ये हला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो उल्टाटा क्लियर ना तो लिखि दो फर्स्ट टर्म इट इज द ओके इट इज द रेसिप्रोकल ओके इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो उल्टाटा बा इनवर्स टा हमें तो कौन कहबा स्पेसिफिक कंडक्टेंस हला इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो सिंबल जानतो काप्पा ताले काप्पा हला तमरा कहार उल्टाटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो उल्टाटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो सिंबल हला कोन रो तार रेसिप्रोकल हला कोन तमरो 1 by रो मेरे प्यारे बच्चों ताले 1 by इट जो रो लिखा है देखलो रो जगह में पुट कर दे परिब ना r into a by l ना अरे करि परिबन यस ऑफ कोर्स ताले r into केते पुट कर देली a by l ताले वर्तमान देखला हम फाइनल पाइ गेली एटा 1 by r into एटा केते पाइ गेली l by a क्लियर ना ताले फाइनल मु पाइ गेली kappa is equal to 1 by r into केते पाइ गेली l by a kappa is equal to केते पाइ गेली 1 by r into केते पाइ गेली l by a पाइ गेली क्लियर ना तामन तमन जानि गलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू अच्छा आर फार्मूला लिखि दोजी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओके स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by r हला तमरो कोन कंडक्टेंस हला कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट हला l by a तमरो कोन कोजे सेल कांस्टेंट कोजे l by a कोन कोजे सेल कांस्टेंट कोजे मेरे प्यारे बच्चों हबो ना हबोनी रेजिस्टेंस रो सिंबल हला r ताले 1 by r टाको मु कहबी कोन कंडक्टेंस और l by a टाको मु कोन कहबी छुआ कोन कहबी सेल कांस्टेंट कहबी क्लियर ना ताले ये तमर फार्मूला तमे को सर आर यूनिट कोन हबो मन किबा कापार यूनिट हबो तमरो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स काहे की ना ये तमरो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो उल्टाटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो सिंबल थिला ओम सेंटीमीटर आर यूनिट आसी तार रेसिप्रोकल मींस तार उल्टाटा ये तमरे जो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों क्लियर ना नहीं ओके सो गाइस प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ओके स्क्रीनशॉट ले जाओ वर्तमान पिला माने देखो सेही जिंस को वर्तमान कोन करूची गोटे डेफिनेशन लिखुची अच्छा मते कहलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तमर जो थिला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थिला से तमर यूनिट वॉल्यूम रे जेति की रेजिस्टेंस शो करे सेटा थिला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किंतु एठी होची स्पेसिफिक कंडक्टेंस पहले गोटे कंडक्टर हम एया बुझिबा तार सेही यूनिट वॉल्यूम जेति की रेजिस्टेंस नो जेति की कंडक्टेंस शो करिवो सेटा को हम कोन कहबा स्पेसिफिक कंडक्टेंस तार वर्तमान तार डेफिनेशन लिख दे परिबा स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओके स्पेसिफिक कंडक्टेंस is the conductance specific conductance is the conductance offered by देखा उसतो offered by unit volume of a conductor at constant volume at constant temperature at constant कोन temperature clear ना are you getting a point so guys please take a screenshot चलो नेक्स्ट देखियो हमर कोन अछि थर्ड आइरो अछि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहले हम कोन बुझिबा ओके ताल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय all the ions present in an electrolytic solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte is called equivalent conductance clear ना चलो वर्तमान हम डेफिनेशन लिखि तो मान को क्लैरिटी देबी ओके लिखि दवा इट इज द कंडक्टेंस equivalent conductance is the conductance em लिखि दो डायरेक्ट the conductance offered by all the ions
all the ions, the conductance offered by all the ions present in an, okay, present in an electrolytic solution, present in an electrolytic solution, present in an electrolytic solution containing 1 gram equivalent, containing 1 gram equivalent, containing 1 gram equivalent of an electrolyte, containing 1 gram equivalent of an electrolyte is called equivalent conductance, is called equivalent conductance, is called equivalent conductance. The conductance offered by all the ions present in an electrolytic solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte is called equivalent conductance. Clear na clear no? ताने गोटे सॉल्यूशन अछि, से सॉल्यूशन रे गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अछि. क्लियर ना क्लियर नो? गोटे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे जो इलेक्ट्रोलाइट ता प्रेजेंट अछि तार 1 ग्राम इक्विवेलेंट जति की कंडक्टेंस शो करिवो सेटा को माने कोन कहबा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहबा. एटा तो माने ऑलरेडी पढा आइछि. जदि जानि परना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो अपलोड होइछि जेंगे देखो सेठी क्लैरिटी आसीबो. क्लियर ना क्लियर नो? वर्तमान बास सतर डेफिनेशन को लिखिलो. वर्तमान it is related to, okay, it is related to specific, it is related to specific conductance, it is related to specific conductance as per the relationship, okay, as per the relationship, okay, as per the relationship. आगे लिखि दउची कैप EQ is equal to kappa into कोन तमरो V. क्लियर ना क्लियर नो? ये तमरो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सहित केमिति रिलेटेड को इक्वेशन द्वारा ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू पिला माने V. V डाला कोन where V is equal to volume of the solution in ml, volume of the solution in ml containing 1 gram equivalent, containing 1 gram equivalent of an electrolyte, containing 1 gram equivalent of an electrolyte. Clear na clear no? ताले क्या EQ is equal to kappa into V. अच्छा तो माने कहलो तो माने समस्त जानि छ we know normality, नांजना जानि ना, we know normality n is equal to W by E into कोन तमरो 1000 by V ना. अरे जानि छ ना जानि ना नॉर्मलिटी फार्मूला देखाउ ना समझ तुम देखि देलो. यस तमन जानि छ we know normality is equal to W by E into 1000 by V. अच्छा W by E हला given weight by equivalent mass ना. एटा को given weight by equivalent एई टर्म को तम माने को पिला माने ग्राम इक्विवेलेंट ना. जदि गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ता भितरे 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो इलेक्ट्रोलाइट अछि ताले W by E रो वैल्यू हला केते 1. क्लियर ना क्लियर नो? ताले वर्तमान लिख दे परिबा सो n नॉर्मलिटी इज इक्वल टू खाली केते गेला तमरो 1000 by केते गेला तमरो V ना राइट. ताले मते कहलो दैट सिंपलाइज खाली V तमरो केते गेला 1000 by केते गेला तमरो n. आ गोटे काम करूची एटा को इक्वेशन 2 दोची, एटा को इक्वेशन 1 दोची. ताले देखलो ए जो देखाउ तो समझ दउ. ओके ताले वर्तमान ए जो इक्वेशन 2 रो वैल्यू को जदि मु नै कि इक्वेशन 1 ने पुट कर देबी ताले त माने कोन पाइ जबटे देखि देलो. ताले कैप EQ इज इक्वल टू kappa into V जगह मु पके देबी कोन 1000 by कोन पके देबी n. क्लियर ना क्लियर नो? ताले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जे गेला हमर रिलेशनशिप पाइ गेलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस into 1000 by कोन पाइ गेलो n. क्लियर ना क्लियर नो? सो गाइस प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके थैंक यू. जिबा नेक्स्ट को चलो नेक्स्ट देखिबा कोन छै हमर मोलार कंडक्टेंस. मोलार कंडक्टेंस पर डिटो एग्जैक्टली तमर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सहित समान. सेठी तमर इलेक्ट्रोलाइट ता 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करथला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ता. किंतु एठी जेतु मोलार कंडक्टेंस ताल से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ता 1 ग्राम मोल रो इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करथिबो. आ से जेतै कंडक्टेंस शो करिवो ताको हम कोन कहबा मोलार कंडक्टेंस. चलो वर्तमान डेफिनेशन लिख दबा. द कंडक्टेंस okay, the conductance offered by, okay, the conductance offered by, okay, the conductance offered by all the ions present in an electrolytic solution, present in an electrolytic solution containing, okay, containing
1 gram mole containing 1 gram mole of an electrolyte hela of an electrolyte is called co-conductance molar conductance is called molar conductance is called co-conductance molar conductance clear na clear no tale barton सेटा भी से वाला relationship tale cap m is equal to ये भी तमर से kappa into कोन तमर हे जीवो v clear ना clear नो ये relationship clear ना clear नो तले बर्तमान एटा इक्वेशन 1 दे देबी आ v टा लिख देबी v is equal to volume of the solution in ml नहीं कि volume of the solution okay volume of the solution in कोथरे ml containing 1 gram mole of an electrolyte हला containing 1 gram mole of an electrolyte clear ना clear नो तले बर्तमान चलो समान जान जडे नॉर्मलिटी पढितलो एठी पढेबो मोलारिटी वी नो मोलारिटी सुनि ना सॉल्यूशन चैप्टर रे 50 थर पढिछ मोलारिटी m इज इक्वल टू हां कोन को w by m into 1000 by v ना v नो 1000 by v रे अच्छा मते कहलो जदी से इलेक्ट्रोलाइट ता तमर 1 ग्राम मोल ले दिबो तले w by m रो वैल्यू केते हबो 1 ना कना गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास को तमर को जे ग्राम मोल तले केते ग्राम मोल 1 ग्राम मोल जदी 1 ग्राम मोल लागला तले w by m रो वैल्यू केते हिजबो 1 तले वर्तमान तले फाइनली मोलारिटी m इज इक्वल टू तमर पाई गलो केते पाई गलो 1000 बाय केते पाई गलो v तले खाली v इज इक्वल टू पाई गलो 1000 बाय कोन पाई गलो m आप इक्वेशन 2 दे दियो तले इक्वेशन 2 रो वैल्यू को ने कि इक्वेशन 1 ने पुट कर दियो मींस v जगह रे पकि दियो 1000 बाय m खेलो खत्म तले क्या m इज इक्वल टू kappa into 1000 बाय कोन पाई गलो m क्लियर नो ओके सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोन तमरो ना तमरो kappa और तमरो कोन मोलार कंडक्टेंस क्लियर नो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस अच्छा बेले बेले भी आरो यूनिट पचार दी आरो यूनिट हो तमरो जानि था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स क्लियर नो आ जदि तमरो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रो यूनिट पचारला तला आरो यूनिट हला ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हला ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स क्लियर ना मन रखिबो बस आज मैं क्वेश्चन करले भलो भाबरे पढी के प्रैक्टिस करो ओके आ तमन सक्सेसफुल हबो मोर विश्वास ओके आ जत मन वीडियो भल लागुची वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कौशिक विश्वाल पर विश्वास रखो एना तमन विश्वास और भरोसा ही मो पई सब किछि थैंक्स अ लॉट जय जगन्नाथ।